ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, व्हाट इज इट, और ये किस तरीके से एक रेवोल्यूशन क्रिएट करी मॉडर्न एज के अंदर? Digitalization of education in education is basically the integration of digital tools and technology in education. The world was not ready for that change, but then COVID happened. Before COVID, nobody wanted to get into like आपका ये concept नहीं था कि आप फ़ोन पे लैपटॉप्स पे पढ़ भी सकते हो. कि बच्चे अब बैठ के सारा दिन स्क्रीन देखते रहे. देखिए, excessive screen time is a concern, but not just in education. It's a concern in every aspect of our life. We have to keep the balance. How do you see education getting in the future, or what more to expect from it in the future? There is a lot more coming. अफाफ, वर्ल्ड टाइम्स के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ये why it's so different from everyone else in the market? Basically, it was not just like I planned and I just initiated the idea. There was a lot of planning behind it. और उसके साथ साथ I knew what are the loopholes in the market right now. My model was not just online recorded lectures. I have made sure that they are also getting the live sessions as well. So feedback चेक करने का मैकेनिज्म कैसे है आपके पास से पर से अगर वो लोग आपको असाइनमेंट्स देते हैं, do you check them and do you get them regularly evaluated? Yes, we have the entire team for that, and especially the teachers themselves. We are having the right people at the right time. Greetings and welcome to another episode of the WTI Talks. मॉडर्न एज के अंदर आजकल स्पेशली एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर बात की जा रही है रिगार्डिंग द डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स और हमारा यंग तबका एक्चुअली इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, किस तरीके से ये मॉडर्न एज के अंदर एक रोल प्ले कर रही है, और वी अप एज पार्ट ऑफ द डिजिटल सेक्टर एज वेल वी वांट टू नो मोर अबाउट इट. हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये इंसानी ज़िंदगी पर एक बहुत मुस्बत असरात लेकर आ रही है. इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर अफाफ भट्टी को. डॉक्टर अफाफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you so much for finally having this podcast. जी, अफाफ इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, और ये एक एड टेक एक्सपर्ट हैं. शी इज़ अ वेरी वेरी जनरस होस्ट एंड प्रेजेंटर, CSS मेंटर भी हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काम कर रही हैं, और वर्ल्ड टाइम्स के अंदर ELP प्रोग्राम को भी लीड कर रही हैं. सो लेट्स गेट स्ट्रेट डाउन टू बिजनेस. अफाफ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, व्हाट इज़ इट, और ये किस तरीके से एक रेवोल्यूशन क्रिएट करी मॉडर्न एज के अंदर? Aisen, to be very honest, digitalization of education in education is basically the integration of digital tools and technology in education. To be very simple about it, it's used to avoid the monopolistic approach of education, and it is like booming on a very large scale. COVID was a blessing in disguise for this medium to excel a lot. Like, it was a $250 billion industry in 2020, and after 2020 it's like increasing 8%. Most probably in, like, according to the CADR, that is compound and growth rate, they are telling that it's increasing 8% from 2021 till 2027. It's a big amount and a big number. ट्रू. तो ये जो डिजिटल सेक्टर के अंदर एकदम से हमने जो बूम देखा है, और आपने कोविड को भी मेंशन किया, Yes. सो आई कैन अंडरस्टैंड वन एस्पेक्ट ऑफ इट कि द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर दैट चेंज, बट देन कोविड हैपन, और उसके बाद एकदम से वी नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेट सोल्यूशन, और ह्यूमन बींग्स की आई थिंक ये एबिलिटी टू लुक फॉर ऑल्टरनेट सोल्यूशन इज़ अ वेरी वेरी जनरस वन. बिल्कुल. So why the COVID became some kind of an impetus for that? क्या रीज़न थी कि कोविड ने एकदम से छोटे छोटे लेवल पर पूरे पाकिस्तान में किक स्टार्ट कर दिया इस पूरे प्रोसेस को? Basically, before COVID, nobody wanted to get into like आपका ये concept नहीं था कि आप फ़ोन पे लैपटॉप्स पे पढ़ भी सकते हो. During COVID, like 90% of the students in America were somehow engaged into online learning. और उसके बाद सबको अवेयरनेस आई कि ओके, दे कैन स्टडी एट होम, दे कैन वर्क फ्रॉम होम, दे कैन डू मिलियन थिंग्स बाय स्टेइंग एट होम. एंड कोविड गेव देम अ लेसन दैट इट्स नॉट जस्ट कि आपको सुबह 8 बजे ही पहुंचना ज़रूरी है, और आपको सुबह सुबह रेडी होना चाहिए, और आप बिकॉज यू कैन गेट इट ऑन द वेरी सेम स्केल. बल्कि आई से आपको ज़्यादा क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल रही होती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो सेल्फ फोकस्ड. आप खुद से खोल के पढ़ रहे होते हो, एंड यू गेट टू लुक इन टू इट इन ऑल द डायमेंशंस. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन दिस. अच्छा, एक आई थिंक कि ईज़ ऑफ एक्सेस की बात आपने अभी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
तो जो नॉर्मल क्लासरूम के अंदर जो नॉर्मल हमारे कन्वेंशनल लर्निंग पैटर्न थे बिल्कुल। वो इवॉल्व होके आ रहे हैं अब टूवर्ड्स डिजिटल लर्निंग की तरफ. हाँ जी। सो यू थिंक दिस चेंज इज़ एक्चुअली अ गुड वन, या रिमोट एरियाज़ में मौजूद लोगों को कुछ फ़ायदा होगा इसका, और जो लोग नॉर्मल कन्वेंशनल अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, बड़े एरियाज़ में रहते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा? देखें, जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, इट्स फॉस्टरिंग अ मीडियम, इट्स बेसिकली अ मीडियम दैट इज़ हेल्पिंग द कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको अवेलेबिलिटी मिल रही होती है चीज़ों की. ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अर्बन एरियाज़ एंड द वंस जिनको हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज्ड एरियाज़, जिनमें कम से कम क्वालिटी या उस तरह से आपको वाईफाई वगैरह की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती. बट समहाउ इन दिस 21st सेंचुरी हर जगह अब एटलीस्ट फ़ोन की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, और इस वजह से ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है. अच्छा, एक ये वाली बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड वाईफाई एंड 4G एंड द कमिंग 5G कनेक्शन, तो जिन एरियाज़ में ये नहीं है, तो डोंट यू थिंक वो लिटिल थोड़ा सा हैंडीकैप हो जाएंगे, या इस पूरे सिस्टम से थोड़ा सा कट जाएंगे जिनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है? ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक, अब रीच पहुंचने की बात है ना. पहले तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं थे, स्कूल्स आ गए, अब फिर इंटरनेट कैफ़ेज़ वगैरह बनना शुरू हुए. एक्सेसिबिलिटी अब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्पेस लेफ्ट जो लोग अब अवेलेबल नहीं है, चाहे जिनके पास अप्रोच नहीं है. लाइक यू सी द सेलफोन इन लाइक 8 by 9 पीपल, कोई ही होगा जिसके पास नहीं है. तो सिमिलरली वही चीज़ होगी कि इफ़ दे आर हैविंग सेलफोन्स, दे डू हैव द ऑप्शन टू यूज़ इट इन द राइट डायरेक्शन. ट्रू ट्रू. और थोड़ा सा गवर्नमेंटल स्फेयर और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी Yes. एक वो किक स्टार्टर बन जाएगा कि बिल्कुल. वो एरियाज़ जहाँ पर मौजूद नहीं है उनको कुछ इस तरह की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए. आई थिंक इलॉन मस्क इज़ डूइंग द सेम विद Yes, स्टारलिंक. तो exactly. प्लीज़ इलॉन, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप प्लीज़ पाकिस्तान वाली साइड को भी कवर करें अपने स्टारलिंक से. ओके, मूविंग ऑन. अफाफ, आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन विद दैट रिस्पेक्ट, और मैं क्योंकि बुकिश आदमी हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो इंसान बुक्स की फिज़िकल प्रेजेंस से सीख सकता है वो ऑनलाइन ही सीख सकता. फिर देन वी हैड द सेपरेट कल्चर, एकदम से लैपटॉप्स आ गए, किंडल आ गए, और Yes. अब काफ़ी हद तक आई एम वाचिंग इन द स्टूडेंट्स इज वेल, वो काफ़ी शिफ्ट हो गया. बट मैं अभी भी वही पसंद करता हूँ कि एक हार्ड कोर, एक मेरे पास हार्ड बाउंड बुक हो, पेजेस हो, उसकी एक फ़ील होती है, उसकी एक स्मेल होती है. तो अब जब हम ये एजुकेशन पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर अकस्टम टू गोइंग टू क्लासरूम्स, और एक फिजिकल टीचर उनके सामने खड़ा हो, वो पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है. आई वोंट जस्ट कॉल इट अ लेक्चर, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल. तो जब हम ये ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ रहे हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हम कंसिडर करते हैं, तो डोंट यू थिंक कि वो जो लोग थोड़े से ओल्ड स्कूल आइडियाज़ के ऊपर एडजस्ट हो चुके हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? As in when I was also growing up, I used to have an encyclopedia bookshelf. I used to consult Oxford Dictionary for every other Yeah. word meaning. But again, we are adopting to changes. आप लोग PDCL के फ़ोन से डायरेक्ट फ़ोन पे आ गए वो सेल फोन्स के एक्सेसिबिलिटी पे. Yes. तो चेंज इज़ द नेसेसिटी ऑफ टाइम. एवरीवन चेंजेस विद टाइम. ऑब्वियसली एक जो आपको फील आती है जो आप बुक से पढ़ते होते थे, या आपका जो एक कंसेप्ट था, बट नाउ वी हैव मॉडर्नाइज इट. वेर एवर यू आर मूविंग यू हैव योर access towards everything. अब ये तो नहीं है कि I have to go look into an encyclopedia. Whatever I used to find it in like 5 minutes, I can just search it in 5 seconds. तो मेरा टाइम, क्वालिटी, हर चीज़ बच रही है इसमें. अच्छा. तो इसलिए I'll say कि obviously, and I guess in during the COVID time you have also experienced कि आपने भी टीचिंग की है उस टाइम में, and students were more active during lockdown because they were prepared themselves to study. यहाँ पे चलो आपको एक ओल्ड स्कूल होता है, चलो इतने बजे आपकी बस आनी है, आपने स्कूल पहुँचना है, True. आपको उठा के भेजा जा रहा होता वो है. जो लॉजिस्टिक्स वाले प्रॉब्लम थे यस, सारे. एग्जैक्टली. यहाँ पे आप खुद अपनी मर्जी से पढ़ने बैठ रहे हो कि अब मैंने ये चीज़ देखनी है. अगेन जैसे अब कोर्सेरा, एडेक्स, देयर आर मिलियन थिंग्स जो आप ऑनलाइन चीज़ें जहाँ से आप सीख रहे होते हो. True. They are helping build not only their educational career, they are also adding up a skill set in the students that is helping them boom in their jobs. And it's freeing up another market, right? 100%. Like पहले इन्फ्लुएंसर मार्केट कहाँ पे थी? There was the publishing media. आप न्यूज़पेपर आते होते थे. अब न्यूज़पेपर का कंसेप्ट तक खत्म हो गया है. वो अखबार जहाँ आता था उसमें इवन फैशन का भी पेज होता था. Exactly. Now the students are not getting that. अब Yeah. I don't know. अब पहले तो पूरा कंसेप्ट होता था अखबार वाला आ रहा है और सब घरों में सप्लाई जा रही होती थी. I don't see it happening now because everyone has internet, everyone has it in their phone. They just open up the app of anything they want to study and they go through it.
तो डोंट यू थिंक जो हमारे कन्वेंशनल टीचर्स हैं अफाफ, वो थोड़े से एप्रीहेंसिव होंगे, थोड़े से फियरफुल होंगे कि दिस समथिंग न्यू विच इज़ कमिंग दैट विल प्रूव टू बी अ प्रॉब्लम फॉर देम? सो वो जो टीचर्स तबका है जो पुराने आइडियाज़ पे रिजिड हो चुका है, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो Yes. चुका है, उनके लिए तो इट्स अ थ्रेट. Basically, it's not replacing the teachers. It's transforming their roles. ठीक है, जिसमें आपको टीचर्स को ऑब्वियसली हमें स्किल तो प्रोवाइड करनी होगी या उनको वो सपोर्ट देनी होगी टू अडॉप्ट टूवर्ड्स द चेंजिंग कल्चर. बट दिस इज़ लाइक आपका बंदा अभी लाहौर में बैठा पूरी दुनिया में अगर लेक्चर दे सकता है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? एंड ही इज़ ऑल्सो गेटिंग एन एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड. बट हाउ अबाउट दैट टीचर जिसकी एक बड़ी सी नीश और सब कल्चरल मार्केट है जो कि लाहौर में इस्टेब्लिश्ड है, और एंड ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ ड्यू टू दैट एंड ड्यू टू दैट पब्लिसिटी एंड पीपल आर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान आर कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. डोंट यू थिंक ही विल फील लिटिल साइड लाइन बाय ऑल ऑफ दैट? और उसको लगता है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ लाइक दैट, टेक्नोलॉजी ऑलवेज Yes. रिप्लेसेस. हमें पता जो प्रिंटिंग प्रेस आया था, फिर वो प्रॉब्लम उसने जो नॉर्मल लोगों की थी जो हाथ से लिखते थे बिल्कुल. वो ख़त्म कर दी. गुटनबर्ग प्रोजेक्ट आया, लॉट ऑफ Yes. दैट. एवरी टाइम टेक्नोलॉजी कम्स, jobs are lost, and this is one of Yes. the job there. But new jobs are also created via this thing. Like for example, अब पॉडकास्ट कल्चर भी आ गया, अब इन्फ्लुएंसर मार्केट का आ गया. जैसे आपने बोला कि एक टीचर का एक अपना सेटअप अच्छा खासा चल रहा है, ही इज अर्निंग अ लॉट, बट ही इज गोइंग टू अर्न 3 times what he's earning right now because he'll not only be getting the excess of the lectures 3 times? more than You believe that? yes. Really? Obviously देखो ना, आपका एक स्टूडेंट आ रहा है आपके पास और आपको उसको अटेंड करना है, उसको हर टाइम आपको ही उसको टाइम इज मनी नाउ. True. एट दैट टाइम आप एट अ टाइम इतनी दुनिया को फैसिलिटेट कर सकते हो. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ बिग मनी मेकिंग बिजनेस एज वेल बिकॉज कंसिडरिंग लाइक इसमें सिंपल एग्जांपल आ जाएगी बायजूस की, दैट लाइक उनका स्पॉन्सर शाहरुख खान है अगर, तो व्हाट हैव दे डन? वो एक सिंगल पर्सन से ही स्टार्ट हुआ था एंड नाउ इट्स लाइक वर्ल्ड वाइड एवरीवन नोज व्हाट बायजूस हैज डन. ट्रू. सो ये डिजिटलाइजेशन वाला पूरा एजुकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एंड एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ इट. पॉडकास्ट कल्चर बड़ा कॉमन हो गया. गुड टीचर्स, गुड पीपल, people who had information, people who had something to add to the community, they are coming to the podcast culture. Don't you think it's getting a little too much? क्योंकि मैं वो बिटवीन एल्डस हक्सली और जॉर्ज ऑरवेल की एक डिबेट जो थी ना, ऑरवेल बिलीव दैट के एक दौर आएगा जिसमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ही ख़त्म कर दी जाएगी और आपको कंट्रोल किया जाएगा. एंड देन हक्सली सेड इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी that you will not be able to distinguish between what is right and what is wrong. So ये जो पॉडकास्टर्स इरप्ट हो रहे हैं हर जगह पर और ये जो कंटेंट हमारे पास मार्केट के अंदर आया, that's all that comes in the vein of digitalization. What's your take on that? I'll start from the beginning. देखो, जब मैंने बात की कि इंसाइक्लोपीडिया का टाइम था, वो टाइम स्पैन कम होके 5 मिनट से 5 सेकंड पे आ गया कि आई यूज टू गेट अ वर्ड मीनिंग इन सेकंड्स. अब पॉडकास्ट इज नॉट लाइक कि हम बस बैठ गए एंड वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन. It's a lot of effort is done behind the podcast. True. जो आपको इतने दिनों में मटेरियल कलेक्ट करना है, वो आप कंसाइज होके 10 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर आपको सब मिल रहा है. Tell me about it. So this is the change that is coming in the world. Yeah. Like people are not getting that much of. इसका एक सिंपलेस्ट मैं तरीका बताती हूँ. पहले यूट्यूब वीडियोज यूज्ड टू बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स, वो अब रील्स पे कन्वर्ट हो गया. पीपल डोंट वांट टू सेट फॉर दैट लॉन्ग टू गेट अ पॉइंट ऑफ एनीथिंग. They are minimalizing their time and getting the best out of it. So podcast culture and even everything that is coming into this is to save time, yet to give you a lot of things within that concise time. Okay, अभी आपने ना YouTube रील्स वाली बात की और Yes. और आई डोंट नो लाइक अराउंड 2012-13 देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें ना हम वाइन्स बनाया करते थे. वो 2-2 3-3 सेकंड की वाइन्स होती थी, वीडियोस होती थी. सो देयर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द होल द क्रिएटिव कल्चर जो हमारा कंटेंट है, उसमें एक एस्पेक्ट ये आ रहा है, people are moving towards shorter and shorter content. Yes. So we came from shorter videos, वो 2-minute videos आई, उससे वाइन्स आई और अब रील्स आ गई. like we just want to like skim through reels. Yes. And there is a totally different market जो कि longer and longer videos बना रही है. So जो रोगन की पॉडकास्ट देखते हैं वो like 2 hours plus की होती है, पीटरसन की पॉडकास्ट देखें वो लंबी लंबी होती हैं. So which is it? Old school one ना. Yeah. So which is it? Which one is it? Do you think It market? depends upon the person who's watching that.
अच्छा. Like we also have elders at our home who are interested in getting a detailed interview session, and we have the children and the youngsters at home who just want to know the crux of the situation. So it's working for both. But don't you think जो लोग ये शॉर्टर वीडियोस देख रहे हैं, दे हैव अ लिटिल लेस कंटेंट और उनको वो डिटेल्स नहीं पता होती, जो हमारी तरह के डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. Again, there are opportunities, there are options in the digital world. They can definitely search into a lot of things, but time is money again, and it saves a lot of time for them to know the crux of what is actually happening. ठीक है. अच्छा अफाफ, तो आप प्रमोट करने आई हैं कि बच्चे अब बैठ के सारा दिन स्क्रीन देखते रहें. वो जो हमारी ओल्ड स्कूल तो नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन का एक डिलेमा था कि बच्चों को स्क्रीन से, टीवी से, लैपटॉप से और उनके टैबलेट से दूर रखा जाए. Here is an individual who is promoting that the one person should be glued to that. Don't you think कि young age के जो लोग हैं उनके ऊपर एक थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, and there will be obviously medical reasons to that. देखिए, excessive screen time is a concern, but not just in education. It's a concern in every aspect of our life. We have to keep the balance. हमें हमारे स्टूडेंट्स, बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है और ख़ुद को भी हमें एक गैप रखने की ज़रूरत है जिसमें वी आर मॉनिटराइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल एंड द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस. We have to keep it on our sake, because eventually we are the one who will be suffering from eyesight problems or any other anxiety also comes along this using that. Yes, exactly. Back problems. 100%. That is now our thing that we have to keep a control on it. And it comes with everything. Like if you were a bookworm, you were studying in the low light, you still were having headaches, you still were having loss of vision and stuff. Like not loss of vision, but again the damage problem. Yes. So this is like upon the person itself how to keep him sane. So आप ओनस दे रही हैं, ओनस डाल रही हैं इस टाइम पे पेरेंट्स के ऊपर, बट थोड़ा सा डाइकोटमी नहीं लगती आपको एक तरफ, क्योंकि 6 to 7 hours अ पर्सन और अ स्टूडेंट यूज टू स्पेंड एट स्कूल, और अब अगर हम उसको डिजिटल लेवल के ऊपर लेकर आ जाते हैं तो दे आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 hours पर डे ऑन स्कूलिंग, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट उनका पर्सनल स्क्रीन टाइम है वीडियोज़ के लिए, गेम्स के लिए या मूवीज़ के लिए, वो बढ़ रहा है. तो जो 24 hours के अंदर अगर हम उसका साइकिल देखते हैं, सो दैट चाइल्ड विच यू आर प्रमोटिंग इज गोइंग टू स्पेंड 12 hours plus on the screen. Yes. That will definitely become a problem. और especially what will you say to the people of the previous generation कि वो कैसे encourage करें या उनको हम कैसे pull कर सकते हैं इस idea की तरफ. It's not basically an entire 12 hours. It's not like you're using the screen for straight 12 hours unless you're not working for the edtech company itself. But again, you have to monitorize yourself, like how much time you're giving to a certain thing and keeping your priorities straight. It's not just you're going to have, if you're having more screen time, at least not play games on that. Use it on the medium of come and have the real world experiences. Keep a balance. Balancing is a must thing for anything. True. So हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा onus present कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर. एंड यू आर नॉट सजेस्टिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, यू नॉट सजेस्टिंग कि वी शुड स्टॉप विद द टेक्नोलॉजी और हम इसको आगे ना बढ़ने दें. No, not at all. Like, okay, everything, like you have to keep a balance between what is happening in the real world. The books are still being published. It's not that books have stopped publishing and the newspapers are not publishing their newspapers. But you have to see what time do you have. You want to either go the smart way, just I'll say minimalize your energy into finding the right material and just coming towards the crux of the situation that okay, these are the things that I need to look forward. Like when the books, जब वो books का दौर होता था, उस टाइम पे books की summaries भी आ रही होती थी. True. अब उन summaries को हमने exactly guide books, और guide book असल book से double size की होती थी. Yes. तो this has changed with time. Now it's up to the people themselves. अब पेरेंट्स को भी रोकना है कि वो भी अपना स्क्रीन टाइम नॉर्मल लेवल पे रखें, और अगेन स्टूडेंट्स को भी अपने सही डायरेक्शन में तैयारी रखें. आजकल के दौर में आई थिंक पेरेंट्स को रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है. यस. द मोमेंट हैव यू रियलाइज कि जो पिछली जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन एक्स है, द वे दे हैव बीन अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक they used to say to us कि हम लोग शायद अट्रैक्टेड होते हैं, they are always glued to that. They are more glued. And the conspiracy theories are rampant. और वो काफ़ी सारी दैट जनरेशन इज बेसिकली द वन जिनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर बहुत रूल किया पहले उनकी ग्रोथ में, और अब इस टाइम पे उनके बच्चे भी उनको ही समझा रहे हैं. सो दे आर द वंस हु एक्चुअली गिव ऑल द ट्रेनिंग. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आ गए. ट्रू. सो what I got from this whole point is that कि we should not let technology stop
बल्कि रादर वी शुड लर्न टू लिव विद इट, यस इसके साथ हमें एग्जैक्टली, जीना पड़ेगा। क्योंकि आपको चेंज अडॉप्ट करना पड़ता है। और जब पूरी दुनिया आप देखें, मैं यहाँ पे बैठ के हार्वर्ड की एजुकेशन ले सकती हूँ, मैं क्यों नहीं लूँगी? It's saving a lot of dollars for me. Yeah. It's saving a lot of time for me. It's not even wanting me to stay out of my country or my family. So there are like the benefits are a lot. True. अच्छा, my next question was around that point as well, जब आपने हार्वर्ड की एजुकेशन का जिक्र किया। Yes. So internationalization of education through the medium of edtech and digitalization, ये एक relatively new concept है, and people are not very much aware of it, कि while sitting in Pakistan, India और श्रीलंका और इस तरह के countries में, you have the opportunity to gain education from the premier institutions of UK Yes. और USA. True that. So how's it happening, और ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा एक गाइडलाइन तो ज़रा प्रोवाइड करें। इसका सबसे जो सिंपल टर्म में मैं समझाऊंगी, अब जैसे मैंने कोर्सेरा का बताया था, लाइक देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज ऑन दैट वेबसाइट। In 2020 there were 47 million people who were registered On Coursera? yes, and in 2021 it's 77 million. Oh my god, that's like With double time obviously आप स्किल सीख रहे हो, आप अपना स्मार्ट वर्क पे जा रहे हो। अब जो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, द IT पीपल हाउ मच दे अर्निंग, अब तो सर्जरीज आपके रोबोट्स करना शुरू हो गए हैं। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग विद टाइम। और इसको फिर मैं अडॉप्टेबिलिटी की तरफ लेके जाऊंगी कि पेरेंट्स should give their kids the opportunity to get themselves enrolled in such courses, because they are not only helping them build a better career for them, but they're also helping them understand what the world is getting into. Right. So we should go for international education, और हम भी 3-4 डिग्री Why not? साथ लगा लें। Yes. Okay, so since you're an entrepreneur yourself and you have been in the business and you've been doing it for a while now, so वो जो सारे pitfalls and ups and downs हैं, वो आप like you're aware of it. I hope so. Yes. And so here's the thing, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये बात कही भी थी कि इस तरह क्वेश्चन पूछना है, what is the guideline or steps और procedure कि अगर कोई शख्स इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और they want to get involved in that, so how does he go about it? वो ज़रा मिशन स्टेटमेंट से लेके ज़रा उनको एक चार्ट तो प्रोवाइड करें। देखें, आपने कोई भी काम करना ना, द बेस्ट थिंग इज दैट यू मस्ट एक्सेल इन दैट। अगर आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं लग रही, आप खुद परफेक्ट है ना, देन गो फॉर इट। क्योंकि अब मैं वर्ल्ड टाइम्स पे ऑनलाइन लर्निंग का प्रोग्राम भी रन कर रही हूँ, और उसमें हम लोग टीचर्स को भी करा रहे हैं कोर्सेज। वी हैव स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई वाज लुकिंग फॉर द टीचर्स, क्योंकि आपने उनकी ट्रेनिंग भी करनी होती है। नो वन इज़ लाइक दैट टेक फ्रेंडली, और उनको आपको पूरा बताना पड़ता है हाउ टू यूज़ द पेन, हाउ टू लुक इनटू द कैमरा, हाउ टू अवॉइड द स्क्रीन एंड स्टफ। उनकी ऑडिटिंग इज अ मस्ट थिंग। आपको पता है मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, बट स्टिल गेट योर सेल्फ ऑडिटेड बाय पीपल हु आर ऑफ द सेम प्रोफेशन, हु आर इन टू द सेम थिंग्स। दे आर लाइक, अगर फॉर एग्जाम्पल योर US हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, गेट अनदर US हिस्ट्री टीचर टू जस्ट जज यू। एंड बिकॉज आपके पास एक इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप देखें, आप लेक्चर्स करा रहे होते हैं, आपका फ्लो रोज 10 दिनों के लेक्चर्स में सेम नहीं होता। True. किसी टाइम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कभी आप थोड़े लोअर लेवल पे भी गए होते हैं। Exactly, life happens. Exactly, but in this online recorded lectures, you get an option to be your 100% best throughout the lectures. और इस वजह से आपका हमेशा 100% जा रहा होता है। तो इस ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो आपको अपने स्किल्स पे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हैव कम्युनिकेशन। बोरिंग लेक्चर्स किसी को नहीं चाहिए, कोई नहीं सुनता। जैसे अगेन लंबे लेक्चर्स, इंटरव्यू से लोग आगे हैं रील्स के ऊपर, बिकॉज दैट 15 सेकेंड रील इज गिविंग द बेस्ट। आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, जैसे एज इफ यू आर हैविंग द एंटायर क्लास सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर एड्रेसिंग देम। Don't you think that's very difficult to look into camera and get the same energy जो 60-70 बच्चों की क्लास के सामने आती है? I find it very difficult. Yes, but again you are doing pretty good. Yeah. So it's just about it learning how you're going to do it. It's an act. And for this, I always say to my teachers, be the teacher you wanted as a student. Oh, that's good. This brings such a good energy into them कि अच्छा चलो, जब मुझे ऐसा टीचर चाहिए होता मैं वैसा बनूं। वो फिर मेरी उनके ऊपर जितना मैं ना काम करना होता है ना, वो खुद मुझे करके दे रहे होते हैं कि मैडम ये देख ले, ये चेंज हमें कर देना चाहिए। या आई हैव अ टीचर who came after his recording of a 4-hour long lecture recording and he said कि मैडम मैंने अच्छा किया, लेकिन ना मैं ये और अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगा। एंड आई सेड ओके फाइन, बिकॉज मैं उसको भी अप्रूव करा सकती थी, बिकॉज ही हैज टॉट गुड इन दैट।
Yeah, but you give him the leverage, yes, right? एग्जैक्टली और इससे आप फिर ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो. ट्रू. सही सही सही. सो एक सोशल लेवल का मेरा क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, क्योंकि it's a social revolution as well, and then put in the digitalization of education, and it's all happening in the last 4-5 years. एकदम से ये बहुत सारी चीज़ें होना शुरू होगी, and then this year and at the end of the last year let's pump it in, और आपने AI भी डाल दिया, और Yes. एकदम से जो सोसाइटी है, डू यू थिंक द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूँ, इज़ रेडी फॉर सच अ चेंज कि एकदम से इतना चेंज हम करें लाइफ स्टैंडर्ड्स को? It's low, but the ones who want to do it, they are doing it. अब चैट जीपीटी का है, एआई का है. अगेन इफ यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन now it depends upon, देखें, अब there are 100 channels on the cable. You don't watch all 100. Yeah. But someone is watching the channels which you don't switch on. True. Right? True. So this is the concept that is like not just in Pakistan but throughout the world. It's up to the person in which direction he wants to continue living his life. If he wants to excel, obviously he can get the courses. He can just build up his profile, put it on Fiverr, put it on LinkedIn, and get opportunities throughout the world. Like if I'm having an opportunity to study from Harvard living over here, I also have the opportunity to work in the countries abroad living over here. If I'm getting paid in dollars, what is wrong in that? You're very much oriented around money, I've seen. It is the important It thing is the of life. reality. It Yes. is the reality. And Achha, it must always be. Like, obviously, people get successful, but Yeah. money makes you and happy. how do you gauge success, right? I don't know. मैं भी कल भी ये बात कर रहा था किसी के साथ कि modern day के अंदर people were like materialism की बात कर रहे थे कि they're oriented around money and youngsters are talking about money. But then again, how do you gauge your success? No, it's not just about money. It's what gives you satisfaction. Satisfaction. If I am doing my online learning program, I am so into my program. It's a sideline thing that it is also giving me a lot of money. Yeah. Both things are making me happy. I'm enjoying the thing what I'm doing and I'm getting paid for it. Yeah. So it's a win-win situation. So it's a passion and it's a fashion. Yes, yes, exactly. हो जाती है. अच्छा, let me play the devil's advocate here, और मैं because मैं थोड़ा सा Marxist ideas भी रखता हूँ, तो I will definitely play that. Okay. This whole digitalization of education and online learning thing is primarily accustomed for or made for the middle class or the upper class, and the lower class has nothing to do with it. Your comments? No, it's for everyone. The course, there are a lot of courses. You can just go to YouTube, see Khan lectures, Khan Academy lectures. They are for free and they are for everyone. It's like how you are, like, obviously there are schools that are costing a lot. There are schools that are for free for kids. Same is the thing with internet. There are a lot of things, like the famous photographer of Pakistan, she's a girl, and she did not had any professional degree in photography when she was experiencing that. And now she's the best one because it's all about skills. I'm not saying start studying from kindergarten till 12th standard online for the ones who cannot afford it and who are not studying. Yeah. But they can have the skills. They can learn technology. They can learn a lot of things that are going to help them excel without even proper education. And that is a big thing. Like people, I am a doctor, I'm a pharmacist myself, but I am into online educational system because I am enjoying this. People are changing their careers and they are modifying what is good for them. But isn't this the whole philosophy है कि एक certain class के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या वो बात कर सकते हैं या वो देख सकते हैं, एंड देन यू टॉक्ड अबाउट द फ्री एस्पेक्ट ऑफ इट, और बहुत सारे फ्री एस्पेक्ट्स भी हैं, बट वो समहाउ जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के हमारे अंदर इनग्रेन हो चुकी है ना कि जो चीज़ फ्री मिल रही है वो शायद हाई क्वालिटी की नहीं है, एंड प्लस देन देयर आर अदर पीपल लाइक यू हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर अ सर्टेन चार्जेस. तो व्हाट शुड आई गो फॉर? एंड इफ़ आई बिलोंग टू द लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड या मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी एतबार से लो इनकम स्टैंडर्ड से है, तो मेरे पास तो एक्सेस नहीं है उसकी, तो आई एम लेफ्ट बिहाइंड. स्टार्ट विद द लेक्चर्स दैट आर एक्सेसिबल टू यू फ्री. वहाँ से एक प्रैक्टिस लेना शुरू करें. उसकी वजह से यू विल बी एबल टू बिल्ड skill set in yourself, and eventually when you'll start earning through it, start buying the lectures that are going to polish your skill set. Acha. This is how I can. So it's a stepwise thing. Yes. It's a stepwise thing. Acha, I was interested in your project at WTI as well, and you have initiated a whole ELP program, and it's like I've been watching it, and it's growing, and it's going really good. More power to you, and I hope it goes well as well. But what's the hallmark of your program? How it differentiates from other people who are providing the same thing?
Listen, it's not that I just one day thought that I'm going to just launch program and I'm going to work it through this. It was a lot of planning, a lot of strategies we used that how are we going to make it the best one. For this, I had super alhamdulillah for this, I got the best team. They were always there, like it's not that how many hours we're working, but when we are working, it's being done the best one. I got even the senior faculty members' lectures were audited twice, even thrice, to make the best out of it. अच्छा. The best part is I knew what the loopholes in the market are, and I obviously there are going to be loopholes still in my program, but again I am trying my best to cover each and everything. If my students are satisfied, if my students are getting the best out of it, then I am happy and satisfied as well. And to keep this like my auditing is never, it's non-stoppable, and I there are times when I have to stop myself from getting that much into it because everyone is giving their best. I am obviously overpossessed for my project, और but ओवर क्रिटिकल भी हो जाता है थोड़ा सा. yes. But you have to keep yourself like ओके अफाफ, वर्ल्ड टाइम्स के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ये, एंड इट्स अ प्रोडक्ट एज वेल, yes. एंड इट्स गोइंग गुड, एंड आई वांटेड टू नो कि व्हाई इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स इन द मार्केट. Shukr alhamdulillah, it's going pretty good. Basically, it was not just like I planned and I just initiated the idea. There was a lot of planning behind it. और उसके साथ साथ I knew what are the loopholes in the market right now. और उन loopholes को cover कैसे करना था was, thankfully I was able to explain it to my team, and they helped me throughout the journey. Abhi we haven't even had one entire year since I have launched the program, but the response is mashallah so good. The students are satisfied, and what I do in my program is I always consult my students. What do you expect? What do you think? How can we improvise it? What are the things that you wanted more? When they are telling me their needs, I am making sure that they are in the program, that either be more lectures on any topic, that either be getting their assignments checked, that either be having more live sessions with the instructor, because my model was not just online recorded lectures. I have made sure that they are also getting the live sessions as well, so that they knew that the people behind the camera are also available to them, and they're more satisfied. Like even if they don't ask that many questions in the live sessions, but somehow they know okay, we are the ones who are asking them to study. So this is how I am taking my program. सो फीडबैक चेक करने का मैकेनिज्म कैसे है आपके पास से पर से अगर वो लोग आपको असाइनमेंट्स देते हैं तो डू यू चेक देम एंड डू यू गेट देम रेगुलरली इवैल्यूएटेड? Yes, we do have our mentors. We do have, I am myself a CSS mentor, so I am also keeping a check that are the assignments being checked properly or not. We have the entire team for that, and especially the teachers themselves. We are having the right people at the right time who are doing the right But job. who's to decide they're the right people? Until and unless the students are not complaining, until and unless my staff is not complaining, until and unless I'm getting the best result, why not? Who to blame then? And what to blame? So we are hoping good things from you, Affaf, regarding this project, and I hope that it goes to a more different locale and international. इसका एक appeal हो जाए. That's better for it. Inshallah. I am also looking forward to that. So digitalization का future क्या है? Like how do you see education getting in the future, or what more to expect from it in the future? There is a lot more coming. Like if you see 10 years back, there was not even a selfie camera. And the specs you see in today's cell phone, they are like unimaginable as well. My God, yeah. And I guess we are in mid of something that a lot is yet to come. Even if we are having a podcast today, maybe after a year or two, we are going to laugh at what we were having for that long. Yeah. There is a lot of technology that is yet to come. And I am really looking forward to what more the scientists and the world is bringing us. अच्छा, ये थोड़ा सा लगता नहीं युवल नोआ हरारी वाला जो टॉपिक बन जाता है कि वो इतना ज़्यादा डरा देते हैं फ्यूचर से कि आपकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, लॉयर्स खत्म हो जाएंगे. जॉब्स कभी खत्म नहीं हुई. डोंट यू थिंक थोड़ा सा एक जानबूझ के एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जाता है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर? किया जाता है, बट अगेन हमेशा इट्स लाइक वो नहीं होता आप मैट्रिक के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, एफएससी के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंटर के बाद नहीं होगा. सेम गोज विद दिस थिंग. देयर आर नो जॉब्स we are not being job free, but yes, we are getting more opportunities. It's how you design yourself and how you are adopting towards the change.
नहीं, as a commentator or as a social commentator as well, I want to know that कि why is that कि जितने भी हमारे पास राइटर्स आते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो एक बड़ा ब्लीक और ग्रिम और डार्क फ्यूचर देते हैं कि अच्छा ये भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और रोबोट्स आ जाएंगे According to और them, सब the कुछ world हो was जाएगा। about to end in like 2019. 2012 Yes, 2012. So मूवी बनाई थी exactly, इसलिए। it's been like more than a decade कि Yeah. जब they wanted the world to end. So nothing is ending yet, and there is a lot more coming. एंड देन पीपल लाइक अस वी सी दोज पॉडकास्ट और वीडियोस और कहते हैं कि ओ अच्छा अब तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाली फील्ड नहीं रखनी और ये वाला काम नहीं करना, एंड समहाउ वी जस्ट वांट टू गो टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर कंप्यूटर ओरिएंटेड डिजिटल वर्ल्ड. Yes, somehow I guess इसमें हमारा religion also plays a very good role in helping us to stay like, okay, this is not happening and this is not how it is supposed to happen. So one must keep on learning and one must keep on polishing whatever they are learning. So what's next from you? Can we expect something new from you around your project, around your Inshallah, platform? there are a lot of things yet to come, and with time, obviously, we'll be letting the sneak students peek know. दे हमें थोड़ा सा, क्या करना चाह रही हैं आप और This हम लोग? podcast itself is a very big sneak peek from me getting through from the lectures till the podcast. So Yeah. a lot is yet coming. No, it was very, Inshallah. very nice talking to you regarding the whole thing. And I had these questions for a while in my head. And I wanted to do this with you for a while now. And thanks to you कि आपने time भी दिया और हमारे पास इस time पे आए. It was a very long due discussion. Overdue, long Yes, overdue. yes. But Alhamdulillah, it went pretty good. And I just want to make sure that whatever we are doing, either in our work and how I'm like doing the project of my own, this is something that is helping out students. True. Okay, if you just talk about CSS, the syllabus itself is so vast, we cannot know what to study and how to study. True. So we have made sure that the students are not wasting their time. They are not wasting their energy in just finding the material and stuff. They are focused and they are working for the best of themselves. The best of themselves, from the best as well. ठीक है. So far, Thank you very much, Affaf. It was very nice talking to you, and I Same hope to do this more with you, or inshallah we'll invite you again. And 100%. from the World Time Studios, it's Ehsan Tarek signing off with Dr. Affaf Bhatti. Allah Hafiz. Thank you so much. Hafiz.